good evening for this webinar. I'm Anupam Lal. I'm Vice President in the Center of Excellence for Dairy Skills in India. And today I welcome you all on this webinar that is on a very important topic for the dairy industry especially. Then the topic is the importance of silage in sustainable dairy business. And everybody knows in the industry in India, though much has been done on this subject in India as of now. However, this is the time when government is also focusing on dairy business, have opened up with a lot of funds also for the dairy business. This is the time when we have to do a focused approach. We have to take a focused approach for this subject, as this is going to be a very important subject for the future of sustainable dairy business in India. Today in our panel with me, I have Mr. Sunil Attri, who is a well-known name in the silage industry and is currently working with Corteva as Business Head Silage Division. Mr. Sunil Attri has earlier worked with Godrej Agrovet, Tata Rallis, and DCM Shriram Limited. He is an Agri graduate with Masters in Business Administration from Punjab Agriculture University. Welcome, Mr. Sunil. Another panelist I have with me is Mr. Jaswant Kalsi, who is an eminent personality from dairy industry. He has worked in the dairy industry for more than 35 years and has worked with various good organizations of the country like NDDB, Reliance, Heritage, and currently he's working as a consultant and is a very good trainer as well. Welcome, Kalsi Saab. So I have got two people, very senior, eminent people from the industry, from silage industry, as well as from the dairy industry. As we all know, green fodder is a very low-cost source of nutrient for all the dairy animals, and it is highly palatable, digestible, and it really helps in digestion for the animals. It also helps in maintaining good health, and it helps in improving the breeding capacity or efficiency of the animals. This is going to be a very important discussion, I believe, Sunil ji and Jaswant Kalsi sir. Current challenges, what we are having in this industry, dairy industry, is number one, related to feed and fodder, is how to provide the balanced nutrition to animals, number one. And second is availability of green fodder throughout the year. That is the current challenges we are facing the dairy industry. The animals do not get the green fodder throughout the year. And then here comes the need of silage, where I'll take Sunil Attri Saab to give his views. As far as the second issue is concerned, first issue, I'll request Sunil Attri Saab, he will take care of this thing. But when we talk about the balanced nutrition, we can address this by creating awareness among the farmers, especially about the importance of benefits of giving this balanced nutrition to animals. Here, the training and skilling of farmers and other people in the sector involved is going to play a very important role. Though through skilling, we can really create awareness among the farmers about what is balanced nutrition and how it can really help in achieving optimum milk productivity, what is the perfect body condition of cattle to be maintained, and how we can improve breeding efficiency of dairy animals. So skilling is really going to help, and is a key, what we call it a key word for the future of dairy industry. As we all know, India is number one in the dairy industry, milk production in the world. But if you see the number of animals we have and the per animal production milk we are getting, we are far behind than any other developed countries. So we have resources, but we have unskilled resources. So a lot of things we need to do as far as the skilling of people in the dairy value chain is concerned. That is very important. And skills, which are the foundation and driving force behind successful any enterprises and entrepreneurs. Hence, at ASCI, we really focus to address the gap between available skill and future skill demand.
lot of things we do in ASCI, that is the Center of Excellence for Dairy Skills. And we do a lot of efforts to help people in skilling, giving them skills about all the aspects of dairy value chain. Now, I'll not take much of time. I'll request Mr. Sunil to take over from here and talk about the importance of availability of green fodder throughout the year and how silage is going to make a difference and how is going to play an important role in the sustainable dairy business, which is, this is the only industry in the last 1.5 years, if you see the industry, how industries have performed. It is a dairy industry who is really done very well as compared to any other industry in India. So I request Sunil Atri sir to take her from here and just increase our knowledge on this subject. Thank you. Thank you, Atri sir. Thank you, Anupam ji. Thanks for the briefing and first of all, for this opportunity to present on my company's behalf, Corteva Agri Sciences. And first of all, I would also congratulate the entire SEDC team, the actions, the initiatives they have taken for the development of a dairy industry by providing and by skilling the people into this industry. Because ultimately, more the skill people are having in this industry and the more they are applying it actually on the farm. So then the growth can be multifolds and it can be actually a profitable dairy in that. So you are the entire SEDC team is doing a wonderful job in that. And also I would thanks Mr. Kalsi for being on the platform and discussing on the rest of the topics. So I would be primarily covering up upon silage, and the topic would be like what is the need for the time, why silage is a game changer in this point of time. So how it can be helpful to the dairy farmers as in terms of the consumption at the farm and in terms of a business as well. So we'll be touching upon different points about the silage at dairy farms, right? So I'm sharing my screen. Would ask Anurag if he could share with me the sharing rights. Anurag, just give the sharing rights to Sunil sir. Yeah, please check now, sir. Yes. Yeah, it is visible now. So my screen is visible? Yes. Yeah. Yes. So good evening, friends. Welcome to all to the platform where we are discussing about silage and the feed and fodder part today. So silage is actually a gateway to the profitable dairy. So how we would be doing this, I'll be walking you through for the entire journey, how we can discuss about this. First of all, we'll discuss a little about on Corteva's behalf, how this silage journey has started and how Corteva is doing, what Corteva is doing in silage. So basically, Pioneer Hybrid Seeds is a part of Corteva Agri Sciences. So it was founded around 100 years back by Mr. Henry Belash, and the company is primarily specialized in hybrid seeds for various crops like corn, millets, mustard, sunflower, and other field crops. But they are also very old into the livestock business. Like you can see that since 1936, the poultry breeding company Highline was a part of Pioneer. And Pioneer also was having business interest in cattle feed vaccines and semen. So they also bought a company which used to manufacture inoculants, particularly used for silage. So when we see at the developed countries like America, like other part of Europe, so then the silage adoption is since more than 50 years back, and people are silage is an integral part of the dairy farmers over there. So inoculants also play a very big role in that.
Pioneer merged in 2007 with the Dow AgroSciences, which is again conglomerate now, Dow AgroSciences, DuPont, and Pioneer Seeds. And the company is now known by the name Corteva Agri-Sciences. So having around more than 90 years, approx 100 years of expertise into corn particularly and the animal nutrition. So friends, when we look at some stats, like in front of you is the per animal productivity. So जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं, जैसा अनुराग जी also quoted in the starting of the meeting, that India is the largest producer of the milk in the world, contributing around more than 24% milk alone, milk production. But when we come to per animal productivity, we can see the graph where we are. When we compare it to the developed countries like USA, UK, Germany, and other countries where 3 to 4 animals are yielding 100 liters. I mean, every animal is having more than 30 liters of milk productivities. India is struggling somewhere around less than 5 liters. So, despite of so much milk producing company or milk producing country, we are at a very behind place in terms of per animal productivity. And how it is important and what we should be doing for that, we'll discuss. So similar is the scenario when we look at the state-wise breakup. So if we look at the entire India, this 190, almost 200 million metric tons of milk production, more than 54% is contributed by these 5 states: UP, Rajasthan, AP, Gujarat, and Punjab. So अगर हम लोग इनका पर एनिमल प्रोडक्टिविटी भी देखते हैं स्टेट्स के अंदर, we would be finding a lot of difference. When we looking at Punjab, we find it more than 10 liter, 12 liters per animal productivity. When we go to some parts of UP or maybe Rajasthan, we find it somewhere around 3 liters, 3.5 liters. So there is a lot of disparity between per animal productivity of the milk. So friends, if we have to see what are the basic parameters and what are the basic pointers at which we should look for this profitable dairy. So any profitable dairy basically resides on 3 pillars. So which are improved genetics of the animal, like अच्छा ब्रीड होएगा हमारे फार्म पे तो तभी अच्छा मिल्क ले पाएंगे, एक अच्छा क्वांटिटी एंड अच्छा क्वालिटी ऑफ मिल्क ले पाएंगे. Second is farm management, which includes हम एनिमल का रख रखाव कैसे करते हैं. So जब हम ब्रीड की बात करते हैं तो then we talk about most of the breeds we are having at our farms are like देसी नस्ल जिसे हम लोग बोल देते हैं, साहिवाल, रेड सिंधी and other local breeds. Whereas when we talk about the improved genetics, we talk about Jersey, we talk about Holstein Friesian. So ये नई ब्रीड्स हैं जिनको हम ला करके डेयरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने फार्म यील्ड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, फार्म प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. फार्म मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाउ डू वी कीप एनिमल्स, हाउ मच वी डू टेक केयर ऑफ देयर फीडिंग पैटर्न्स, वी टेक केयर ऑफ उनकी गर्मी सर्दी का हम कैसे ध्यान रखते हैं, उनका हाइजीन कैसे मेंटेन कर रहे हैं, हैव वी डन डीवॉर्मिंग टू द एनिमल्स एट अ टाइम, हैव वी डन are we giving them proper you can say the balanced ration and throughout the years, and are we doing the right practices, are we getting them reared in a proper way. So farm management भी उतना important है, improved breed भी उतनी important है. और तीसरा एक बहुत मेजर पिलर जो हमारे सामने आता है वो है एनिमल की न्यूट्रिशन का. तो ये दोनों ही चीजें, एक इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट और अच्छी फार्म मैनेजमेंट जब ही अपना असर दिखा सकती हैं, एक फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी पे काम कर सकती हैं, when we are doing the right nutrition for the animals. So when we talk about right nutrition, what does it mean? So basically 2-3 things, like are we doing the life cycle feeding? See, when we usually look at some of the farmers, not some, in fact most of the farmers, when we look at in some areas, we find that people are feeding in a very generalized way to every stage of animals. Like there are animals who are 5 months old, 2 months old. There are animals who are at their first conception stage. There are animals who are into drying phase. There are animals who are into peak milking.
So सबको एक जैसा खाना, एक जैसा ही रेशन देना is not a right solution. So are we doing a life cycle feeding as per their body need, as per their age needs, as per their weight needs? This is one. And regarding nutrition, if we look at the second important part, friends, I found is the balanced ration. So mostly some of the farmers, they are feeding dry and green fodder, and sometimes some rations from some home mix from their home side. So कहीं पे किसी ने चना चोकर दे दिया, कहीं पे किसी ने कुछ दाना खरीद करके दे दिया, तो ये इसी तरीके से चलता है. बट एक बैलेंस्ड राशन की जब हम लोग बात करते हैं, तो वो इंक्लूड करता है एक प्रॉपर फीड, एक टोटल उसे ड्राई मैटर एनिमल को जो उसकी एज के हिसाब से, उसके मिल्किंग स्पैन के हिसाब से चाहिए, एंड अलोंग विद दैट व्हाट आर द सप्लीमेंट्स नीडेड एंड व्हाट आर द कंसंट्रेट्स नीडेड. तो ये सारी चीजें मिलकर के उसका ड्राई ग्रीन दोनों फॉडर सप्लीमेंट्स एज वेल एज द कंसंट्रेट फीड, सो दिस बिकम्स अ बैलेंस रेशन. तो हर एनिमल की उसकी एज के अकॉर्डिंगली एक अलग बैलेंस रेशन की एक रिक्वायरमेंट बनती है. आर वी फीडिंग एनिमल अकॉर्डिंग टू दैट? So that becomes an important question in front of us when we come discuss nutrition. Third major point which we will be discussing today over here is the actual ration security and processing. See, I'll walk you through some of the slides जहाँ पे हम fodder की availability क्या है इंडिया के अंदर, उसके ऊपर एक बात करेंगे. So रेशन की availability जिसमें सबसे बड़ा पार्ट जो fodder है, एक क्वालिटी fodder, क्वालिटी forage, जहां से उसे क्वालिटी न्यूट्रिशन मिलनी है, ये एक बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन है हमारे सामने, जिसको हम कनेक्ट करेंगे आगे साइलेज फीडिंग के साथ. So friends, these are some of the figures which when we look at these are the figures from 2015 till the projection of 2025. So basically तीन टाइप के राशन होते हैं. One is dry, other is the green fodder, and third is the concentrates or the जो हम compound feed की बात करते हैं. So when we talk about their requirements and the availability, friends, we can look at the previous year, the जो साल निकला है, approx dry fodder की availability. Dry fodder की availability was a very big issue. Around you can see 23% deficit. 23% deficit यानी कि 530,000 मेट्रिक टन की 530,000 मिलियन मेट्रिक टन की जो रिक्वायरमेंट थी हमारे पास में. तो इस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट डेफिशिट जो हमें 23% डेफिशिट है, हम लगभग एक पांचवा हिस्सा डेफिशिट के ऊपर हमेशा अपने एनिमल को खिला रहे हैं. ये ऑल इंडिया के आंकड़े हैं, और ये डेफिशिट जाकर के कहीं आगे हमें अगले 4 साल में कम होता हुआ नहीं दिख रहा है. सो 530 के अगेंस्ट हम 408 मिलियन टन का जो फीड हमारे पास में है, वो आगे चल के 550 के अगेंस्ट 433 ही रहने वाला है. तो वो ड्राई फॉडर कहाँ से आएगा, कैसे करेंगे उसके लिए? दिस इज वन क्वेश्चन. व्हेन वी लुक एट द ग्रीन्स अवेलेबिलिटी, these are all again government of India's data points which I am sharing with you. ग्रीन की अगर अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग 600 मिलियन टन की जो अवेलेबिलिटी के अगेंस्ट डेफिशिट पड़ता है 32% का. ऑलमोस्ट तीसरा हिस्सा हम लोग डेफिशिट पे हैं. बहुत सारी स्टेट्स हैं, हम जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में हम लोग बैठे हैं, वी कैन लुक एट आवर स्टेट्स. ये भी एक दो स्टेट्स को छोड़ करके हमें सब स्टेट्स में यही दिखता है कि throughout the year greens are not available. Greens are a very big problem, and बहुत सारी ऐसी जियोग्राफीज हैं जहां पे तो ग्रीन बहुत ही थोड़े समय के लिए अवेलेबल होते हैं. How are we gonna solve this problem? So similar is the situation with the concentrates. Concentrates में भी धीरे धीरे जैसे कंपाउंड फीड के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, बहुत सारी अच्छी कंपनी इसके अंदर काम कर रही हैं, but yet there is a very big deficit, and which again as per the projection is going to increase. अब ये सारे डेफिशिट हम देख रहे हैं कम नहीं हो रहे, इंक्रीज हो रहे हैं. ये हो क्यों रहा है दोस्तों? इसका कारण, एक सबसे बड़ा कारण हम लोग देखते हैं, वो ये है बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ में बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है फूड ग्रेन प्रोडक्शन के ऊपर, एंड फार्मर्स आर ब्रिंगिंग मोर एंड मोर एग्रीकल्चर लैंड अंडर द फूड ग्रेन्स. सो उसी वजह से, और जहां पे एनिमल का काउंट भी बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं उसी वजह से दिस डेफिशिट ऑफ द ड्राई एंड ग्रीन फॉडर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. So how we can solve this problem?
we'll just move into that. Just a moment, my cursor is. So साइलेज एक सोल्यूशन है उसके लिए. अब साइलेज है क्या? अगर हम साइलेज की इन जनरल बात करें, so what we can see is like when we want to preserve some fruits or some vegetables, what do? हम अचार बनाते हैं उसका. हम सीजन में, जब अभी आम का सीजन निकला है, तो हम लोग आम इकट्ठे कर लेते हैं, आम को काट करके उसका अचार बना लेते हैं with the help of certain ingredients, and when we want to eat it in the future, we can easily eat it, and that is the preserved food which we can enjoy afterwards when there is not any actual seasonal availability. आम का अचार, नींबू का अचार जैसे बनाते हैं, similar is the concept when जब हम एक फॉरेज को काट करके आगे अचार की तरह तैयार कर लेते हैं उसके एक प्रोसेस के थ्रू which is called anaerobic fermentation. तो आगे उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग, ये अचार हम क्यों तैयार करते हैं, कैसे तैयार करते हैं. सो साइलेज है क्या? बेसिकली दिस इज नथिंग न्यू, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया. दिस इज जस्ट अ प्रिजर्वेशन. हमें लगता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमें 1 महीने में या 2 महीने में पर्टिकुलरली हमारी एक फसल काट करके आती है जिसमें हमारे पास अच्छे फॉडर्स एंड फॉरेजेस अवेलेबल हैं. So then we preserve and we keep it for a longer period. How do we do this preservation? We just keep it airtight. इसे हम anaerobic conditions में सेव कर लेते हैं. So what is anaerobic condition? Anaerobic condition कि ये चारा काट करके एक पर्टिकुलर साइज के अंदर जब हम इसे लंबे पीरियड के लिए स्टोर कर लेते हैं, तो दैट इज एनारोबिक कंडीशन में उसके अंदर से बिल्कुल हवा निकाल के उसके अंदर से बिल्कुल हम ऑक्सीजन निकाल देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एनारोबिक कंडीशन. और ऐसी कंडीशन के अंदर में जो उस प्लांट्स के अंदर के बैक्टीरियाज हैं या बाहर से हम इनॉकुलेंट्स के थ्रू भी डालते हैं, तो बैक्टीरियाज एंड यीस्ट जो उसके अंदर है वो उसकी फर्मेंटेशन कर देते हैं, एंड वो फर्मेंटेशन उसको लंबे पीरियड के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी बढ़ा देता है एज वेल एज उसकी लंबे समय के लिए हमें एक अवेलेबिलिटी भी इंश्योर कर देता है. तो वी कैन सी लाइक जैसे ये क्रॉप है, क्रॉप को हमने काटा, चारे में बनाया, तो इसको छोटा चारा जो हमने काटा इसको हम लोग 2 तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं. जो एयर टाइट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, वी कैन मेक अ बिग पिट, we can store the entire forage into that, and we can again press it with the help of some heavy vehicles, and so that the entire oxygen or entire air is oozed out. So afterward we just cover it with the help of big tarpaulins and other plastic sheets. तो जिसको हम अगर 40-50 दिन तक रखते हैं तो ये साइलेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. सिमिलर इज द कंसेप्ट विद द बेलिंग यूनिट्स. देयर आर सम मशीन्स कॉल्ड बेलर्स. तो बेलिंग में क्या होता है कि जो आप इसका हॉपर देख रहे हैं इसके अंदर इसकी प्रॉपर प्रेसिंग कर दी जाती है. ये जो चारा है, काटा हुआ चारा, उसको प्रॉपरली एयर टाइट करके उसके अंदर कुछ बेल्स, प्लास्टिक शीट्स के अंदर उसको बांध दिया जाता है, एंड वी कीप इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड. सो फॉर जस्ट फॉर रेफरेंस आई कैन शो यू, आई हैव वन वीडियो टू शेयर. Is my video available? Anurag ji, can you comment? So not now. Just a moment, I will have to share my entire screen in that case. Yes. Yes, now it is available, sir. Is it available now? Yes. So this is just how this crop is harvested. The entire crop along with the cob is harvested, and the chopped fodder is directly thrown into some tippers or some trolleys. So this is one of the live video I captured. So this is again just one of the you can say one of the method to cut this crop.
Otherwise, there are some other methods like you cut the crop manually and you just chop it into a various size according to the chopping machine. So basically, इसको 1 से 1.5 सेंटीमीटर इस चारे को काटना है for a better rumination and a better availability to the animal. इसको फिर दोबारा हम जो इन बंकर्स के अंदर और इन बेल्स के अंदर डालते हैं. I will show you some videos for that also. Just a moment. Is the video available? Can anyone confirm? Yes, sir. Video is visible. You have to play it, sir. Yeah. Playing. So this is basically you are making bales for with the green fodder, I believe. Yes. This is basically the machine for making the bales for green fodder. No, sir. This is a machine where you just cut the green crop. Okay. Just a moment. So this is like this type of fodder which when we cut from the standing crop, this is a green fodder. So Okay. we just put it in the hopper of the machine, and machine just compress it and just make it very airtight so that the entire air is removed out of that. Okay. So this is the one way when we make the silage with the help of machines. There is another way when the downside photo which you can see the tractor standing over the pit. I can also show you that video. So the green fodder you would be either wrapping up in the bale or you would be putting up in a pit and then you would be pressing it like. So this is a bunker, basically a very large bunker made on the flat ground. So usually people what do is they can either make a pit inside the ground. They can dig a pit as per their requirement, or they can maybe most of the large dairy farmers, they're making concrete bunkers. So they're making standing walls and a concrete bunker, and they can put the cut crop over there, and with the help of these tractors and heavy vehicles as I shown in the video, so they just compress it so that the entire air is moved out. Afterwards, when the bunker is full up to the top capacity, so they cover it like this with the help of plastic sheets. So this is the way when they keep it in this condition for 50 to 60 days. So this kind of brown material, that green fodder turns something brown and fermented. एक खट्टा सा smell इसके अंदर से आता है. So ये then it becomes a proper silage. So what you have to do is कि सिर्फ आपको ये 50 से 60 दिन जो ध्यान रखना है आपको कि इसको हवा किसी भी एंगल से ना लगे. So you will have to make sure कि इसकी सारी साइड्स पे अगर बंकर के अंदर है तो सारी साइड्स पे प्रॉपर प्लास्टिक शीट्स एंड टारपोलिन्स जो लगी होनी चाहिए, एंड वो किसी भी साइड से एयर नहीं आना चाहिए, क्योंकि एयर आता है तो दैट gives birth to different yeasts and molds. तो जो अलग अलग फंगस उसके ऊपर लग जाती है, तो दैट forage isn't good to be fed to the animals. इन जनरल ऐसे नौबत नहीं आती है, वो कोई 2-4% आता है अगर प्रॉपरली एयर टाइट रहता है साइलेज, तो उस केस में वो हम उसको सेपरेट कर देते हैं, 2-4% भी ऐसा आता है. Otherwise, this silage is then cut from the bunker or from dig out from the bales and then fed to the animals. One thing we have to take care over here is
जब भी एनिमल को ये फीड करा जा रहा है, बिकॉज दिस feeding of silage, preservation and feeding of silage again is a very vast topic, as I discussed last time, that how do we take care of good care of के इसको हवा ना लगे। तो डेली के डेली जैसे आगे की साइड से अपने को 4 इंच 6 इंच काटना है अगर बंकर के अंदर है और उसे प्रॉपर बकायदा, देन वी कैन कवर इट अप। सिमिलरली अगर हम उसे बेल में से फीड कर रहे हैं तो उसे बेल में से जैसा हमने निकाला, देन ओपन पार्ट जो बेल का, वी अगेन हैव टू कवर इट अप सो दैट कि उसके ऊपर फंगस वगैरह का उसके ऊपर अटैक ना आए। सो इस तरीके से दिस इज द प्रोसेस हाउ वी हार्वेस्ट इट, कट इट एंड मेक इट एयर टाइट, कंपैक्ट इट एंड देन कीप इट फॉर 50 to 60 days, so after which it is able to be fed to the animals, dairy animals. So this is a broad process of silage making. So अगर हम इसके ऊपर बात करें इसकी जरूरत क्यों है हमें, बेसिकली अगर इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके फार्म के लिए यस है, आपके बिजनेस के लिए यस है, तो देन यू नीड इट। इफ यू हैव अ फॉडर स्कैर्सिटी ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द ईयर, तो यस यू नीड साइलेज। इफ यू फेस अ प्रॉब्लम कि डेली के डेली कौन चारा काट करके लाए, सपोज आई टेक एन एग्जांपल ओवर हियर, if a farmer is having around say for example 5 animals only, we don't take example of the large farmer only, 5 animal डेली के डेली एक एनिमल को चारा खिलाने के लिए 35 से 40 किलो चारा लगेगा उसका लगभग, एंड कंसिडरिंग 30 kg ओनली फॉर 5 एनिमल्स, इट बिकम्स 150 kg। 1.5 से 2 क्विंटल चारा डेली के डेली काटना इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर नाउडे फॉर एनीवन, बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ लेबर स्कैर्सिटी। इवन हमारे खुद का टाइम भी बहुत इन सब चीजों में चला जाता है, we cannot afford it, and many a farmer, they are not having sufficient land for them for the entire year to grow this green fodder. So the land limitation is again a challenge. Uniform milk quantity, when we talk about this, like when we see milk at a dairy farm, maybe a commercial or home based dairy farm, so when we generally see that in the summer's time there is the milk drop, there is a lot of milk drop. किसी फार्म के ऊपर अगर 50 लीटर दूध आ रहा है तो समर्स के अंदर वो 30-35 लीटर के ऊपर आकर के कहीं अटक जाता है। सो ये जो अगर आ रही है तो यस, देन सैलेड कैन ऑब्वियसली हेल्प ओवर देयर। अगर एनिमल का अच्छा पोटेंशियल है, वी आर रेयरिंग मे बी सम एक्सोटिक ब्रीड्स बट वी हैव नॉट टच्ड मोर देन 7 लीटर 8 लीटर, so yes, silage can help you find out explore the full genetic potential of the animal. So ये मुसीबतें, ये दिक्कतें जिन जिन लोगों के साथ में उनको silage की नीड है, and most of these problems are occurring with the one or other dairy farmer. अगर हम ये कब बात करेंगे, ठीक है हम ग्रीन ही क्यों नहीं खिला देते एनिमल को, so then why not? So उसके कंपैरिजन में I can show you is बेसिकली अगर आप ग्रीन खिलाते हो तो सबसे पहला बात तो दोस्तों यही आती है कि ग्रीन फॉडर के अंदर 85% तक जो है वो मॉइस्चर होता है, पानी होता है उसके अंदर। तो आपको उसमें जो ड्राई मैटर एनिमल के पेट भरने के लिए मिलना है वो खाली 15% तक ही मिलेगा। विजा भी जब उसको आप कंपेयर करोगे साइलेज के साथ में, यू वुड फाइंड अ गुड साइलेज विद अराउंड 30 to 35% ड्राई मैटर। तो आपको जहां पे आपको 40 किलो खिला रहे हैं वहां पे आप 25-26 किलो खिला करके भी जानवर का पेट भर सकते हो। दिस इज वन। सेकेंडली, जो हरे चारे के अंदर अगर हम न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की बात करेंगे या सूखे चारे के अंदर, तो आपको भी पता है उसके अंदर से क्या न्यूट्रिशन मिलना है, बट जब हम उसको साइलेज की फॉर्म में खिलाते हैं तो देयर इज न्यूट्रिशनल प्रोफाइल एनरिचमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं कि हरे चारे से सपोज अगर कहीं मक्का का चारा खिला रहे हैं हम जानवर को, तो 6-7% प्रोटीन हमारे जानवर को मिल रहा है। व्हेन यू फर्मेंट इट, व्हेन यू मेक अ साइलेज ऑफ दिस, तो आपका वही प्रोटीन उसको 8.5 से 9% तक चला जाता है। सो दिस वे यू आर इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द फॉडर। सेकेंडली, हरे चारे की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट सीजन्स, सर्दी है, गर्मी है, पतझड़ है, बहार है। तो हर सीजन में एक जैसा चारा नहीं मिल पाता है फार्मर को। लेकिन वंस यू मेक अ साइलेज, मे बी एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर और एट द ईयर, या साल में 2 बार जब भी आपके पास एक अच्छा हरा चारा रह रहा है, उसको आप साइलेज में कन्वर्ट कर लेते हैं,
तो आपका पूरे साल भर के लिए यू कैन इंश्योर अ प्रॉपर गुड साइलेज, गुड क्वालिटी फॉडर। अच्छा, बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं, कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि हमारे पास तो सारा साल हरा चारा मिल जाता है, देन व्हाई टू फीड साइलेज। दोस्तों, न्यूट्रिशनल वेरिएशन एक पार्ट होता है, हर एक चारे के अंदर एक जैसा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। आज की डेट में अगर हम बात करेंगे बरसीम की, मेज की, नेपियर ग्रास की या बाजरा की, तो अलग अलग क्रॉप्स अगर अलग अलग सीजन में बंदा ले रहा है तो उसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल भी क्रॉप का चेंज हो रहा है। तो जैसे ही ये चेंज होता है तुरंत से उसका इफेक्ट जो एनिमल के मिल्क के ऊपर दिखता है कि हाँ, आज चारा हमने चेंज कर दिया, तो उस महीने से उसका जो है दूध एक डिफरेंट लेवल पे आना शुरू हो जाएगा। तो आपका जो डेयरी बिजनेस, आपका व्यवसाय है, ये जो इसके अंदर एक स्टेबिलिटी आपको नहीं दिखेगी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके का दूध दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसीलिए एक अनसर्टेन प्रोडक्टिविटी भी इसकी बनी रहेगी। तीसरा लेबर का जो मैंने आपको बताया ही है। तो ये सारे एक मोटे कारण हैं जो कि हमें हमें बहुत ही एक अच्छा कन्विंसिंग देते हैं कि वी शुड बी अडॉप्टिंग गुड क्वालिटी साइलेज, वी शुड बी मेकिंग गुड क्वालिटी साइलेज। अब साइलेज से मिलता क्या है जो कि हरे चारे से नहीं मिल पाता? जैसा कि मैंने बताया, इंक्रीज्ड पैलेटेबिलिटी, एक बहुत ही भीनी भीनी एक खट्टी सी एक स्मेल आती है जिसको जानवर बहुत ही ज्यादा लाइक करता है। आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ थ्रू सेडसी टीम ऐसे लोगों के फीडबैक, ऐसे लोगों के जो वीडियोस, उनके कनेक्शन शेयर कर सकता हूँ जहाँ पे आप देख सकते हो कि जब वो चारा खिलाते थे और साइलेज नहीं खिलाते थे, वो पैलेटेबिलिटी जानवर की कैसे इंप्रूव हुई। कहते हैं अच्छा चाव से खाता है। हम कहते हैं ना कि जैसे घर पे भी छोटा बच्चा अगर चाव से खाना खा रहा है, अच्छे मन से खाना खा रहा है, तो उसकी हेल्थ इंप्रूव होती है। तो पैलेटेबिलिटी इंप्रूव होएगी तो जानवर की हेल्थ अपने आप ही इंप्रूव होएगी, एंड हेल्थ विल अल्टीमेटली मेक एन इम्पैक्ट ऑन मिल्क यील्ड। डाइजेस्टिबिलिटी बहुत बढ़िया बन जाती है क्योंकि एक फर्मेंटेड फॉडर जो उसका बन जाता है वो इजीली टूटता है पेट के अंदर जाकर के। उसको पचाने के लिए जानवर को बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। ड्राई मैटर, मेटाबॉलिक एनर्जी, उसका क्रूड प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारे के सारे न्यूट्रिशन प्रोफाइल्स उसके अप हो जाते हैं और ये अप होने की वजह से उसको मिल्क यील्ड में बेनिफिट मिलता है। एंड विज़ावी वी कैन आल्सो सेव जो हमारा डेली की मशक्कत है, 1.5 कुंटल चारा काट के लाने का, वो मशक्कत से हम लोग बच सकते हैं। तो साइलेज बनाने के लिए मोटे मोटे तौर पे या तो हम मक्का यूज करते हैं या सोरगम यूज करते हैं, कई जगह बाजरा यूज करते हैं, कई जगह कई लोग घास फूस यूज करते हैं। तो ये सारी क्रॉप्स हैं इसको साइलेज बनाने के लिए। बट व्हेन वी सी के कौन सा साइलेज है ऐसा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जिसका सबसे अच्छा साइलेज बन सकता है, तो हमारे सुझाव में मक्का का साइलेज जो है वो सबसे अच्छा साइलेज साबित होता है। और ये हम लोग खाली अपने तजुर्बे से नहीं, हम अपने तजुर्बे एज वेल एज जो हम जो एडवांस कंट्रीज हैं जहाँ पे लोग बहुत लंबे समय से इन्हीं नस्लों को, हॉल्स्टीन फ्रीजियन और जर्सी को, इनको साइलेज खिलाते हुए आ रहे हैं। सो जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो मक्का का साइलेज वो खिलाते हैं इनको, जिसमें कि अच्छा, मक्का का साइलेज ये कि आपको वसंत ऋतु में, वर्षा में, उसके बाद भी आपको किसी टाइम पे भी आप इसको लगा सकते हैं। एंड इससे जो पर एकड़ जो यील्ड मिलती है वो किसी भी क्रॉप के तुलना में सबसे ज्यादा है। अमूमन 150 एकड़ से लेकर के 250 एकड़ तक की आपको डिपेंड करेगा कि कौन सा नस्ल का आपने बीज लगाया है उसमें मक्का का। लेकिन 150 कुंटल से लेकर के 250 कुंटल तक पर एकड़ का जो झाड़ मिलता है अलोंग विद द क्रॉप, जिसको आप सैलेज के लिए लगा सकते हैं। इसीलिए मक्का की फसल अच्छी बताई जाती है। स्टार्च, शुगर्स एंड क्रूड प्रोटीन इसमें अच्छी मात्रा में होते हैं और अच्छी अच्छी डाइजेस्टिबिलिटी होती है। एनिमल का जो साइलेज जो फॉडर वो खाएगा वो गोबर में कम निकलेगा, उसका उसकी सेहत के लिए ज्यादा कंज्यूम होगा। मूविंग फॉरवर्ड, अभी अगर हम इस पे बात कर लेते हैं एक बार कि एक अच्छा साइलेज बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है। 3 चीजों का आपने दोस्तों ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग इज आप राइट हाइब्रिड कौन सा ले रहे हो, क्योंकि यहीं से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। अगर आपने अच्छा हाइब्रिड नहीं लिया तो मे बी यू मे नॉट बी गेटिंग दैट गुड बायोमास विद यू। तो आपको पूरे, जहां पे आपने सपोज 1 एकड़ से जो बायोमास लेकर के आपने चारा बनाया था उसके लिए आपको हो सकता है 2 एकड़ लगाना पड़े या 1.5 एकड़ लगाना पड़े। तो राइट हाइब्रिड इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने एरिया में जो भी टेक्निकल कंसल्टेंट है या जिसके पास भी आप मक्का के लिए एक हाइब्रिड लेना जाते हैं,
तो वहां पे पहले ये पूछेंगे हाइब्रिड का हमें बायोमास कितना मिलेगा, कितना यील्ड मिलेगा हमें इसका। तो लुकिंग एट द यील्ड, आपको दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों ये देखना है कि कॉब और प्लांट का रेशियो क्या रहेगा, यानी कि उसके अंदर जो भुट्टा, जो छल्ली कॉब रहेगा, उसका और उसका जो पौधा है, वो दोनों के वेट का रेशियो क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैं बात करता हूँ, जैसे कि 40-60 का रेशियो इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड रेशियो। लाइक इफ यू आर कटिंग 100 kg of forage of maize crop, so out of that 100 kg forage, 40 kg should be the weight of the cobs, because ultimately the starch and other metabolic energy part and even the crude protein part you would be getting in your silage from the cob part only, जिसके अंदर जितना ज्यादा दाना, जितना अच्छा वेटफुल दाना होएगा, उतना ही अच्छा आपको ये सारी चीजें यहाँ से मिल पाएंगी। उस हाइब्रिड की डाइजेस्टिबिलिटी कैसी है, आप उसके क्रूड फाइबर का कंपोनेंट पूछिए उस कंपनी से या उस सेलर से जिसका भी आप हाइब्रिड लगाना चाह रहे हैं, ये टाइम से रेडी हो जाएगा या नहीं होएगा। कई बार देखने को आता है कि लोगों ने सैलिज के लिए एक क्रॉप लगा ली एंड बाद में क्या होता है कि वो काफी देर तक, 100 दिन तक वो खेती नहीं खाली हो रहा है। सो और फार्मर की अगली फसल भी उससे हैम्पर होती है कि वो अगली फसल लेट होती जाती है, तो टाइमली रेडी हो रहा है या नहीं हो रहा। ये 3-4 चीजें राइट हाइब्रिड की पहचान बनाती हैं। देन यू शुड बी ऑल्सो थिंकिंग ऑफ के किस टाइम पे इसे काटना है। तो एक हाफ मिल्क लाइन बोलते हैं एक स्टेज को, व्हेन जब हम भुट्टा उसका निकल आता है, the cob bears on the plant and it is at a stage when we press it with our nail, thumbnail, तो उसके अंदर दाने के अंदर it should be dented one, उसके अंदर से मिल्क ऊज आउट नहीं करना चाहिए। तो दाना आधा मिल्की एज वेल एज आधा जब पकी हुई स्टेज में है, तो दैट इज द राइट स्टेज विच इज कॉल्ड हाफ मिल्क लाइन स्टेज। maybe in the time to come we'll talk on these individual topics at a length, बट मैं अभी एक बार आपको ब्रॉडली ब्रीफ कर देता हूँ। हम प्लांट को कितनी हाइट पे काट रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हम उसका कितना छोटा टोटा कर रहे हैं, उसका कितना व्हाट पीस साइज वी आर मेकिंग, it shouldn't be too large that it remains in the rumen of the animal for a longer time, it shouldn't be too small एनिमल उसमें जुगाली ही नहीं कर पाए। सो अमूमन 1 से 1.5 सेंटीमीटर का जो चॉप साइज है वो इसमें रखना चाहिए अपने को। देन थर्ड पार्ट जो आता है इसका फर्मेंटेशन का या स्टोरेज का, तो उसके राइट अच्छे तरीके से जो साइलेज मैंने बताया, चाहे वो बेल्स में बनता है चाहे वो आप बंकर के अंदर बनवा रहे हैं, तो इट शुड बी प्रॉपरली कंपैक्टेड, उसके अंदर से प्रॉपर एयर निकल जाना चाहिए। अगर थोड़ा एयर उसके अंदर रह जाता है तो देन इट विल नॉट बी मेकिंग अ गुड क्वालिटी साइलेज। उसको कहीं से हवा नहीं मिलनी चाहिए, इट शुड बी प्रॉपरली एयर टाइट एंड 50 to 60 डेज मिनिमम आपको इसका वेट करना चाहिए। हाँ, आपको और उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो यू शुड बी यूजिंग सम गुड क्वालिटी इनॉकुलेंट्स आते हैं इसके लिए, जो प्रॉपर अच्छा क्वालिटी का इसके अंदर जो बैक्टीरियाज रहते हैं उसकी फर्मेंटेशन को तेज कर देते हैं। विद द यूज ऑफ these inoculants you can even open up silage at least 1 week or 10 days prior in general conditions के comparatively. So all these 3 things make a good quality silage. So ये कुछ important part है, I can leave with you. जैसे इसके अंदर कुछ lactic acid, acetic acid and butyric acid, इनका certain percentages है। तो जब हम silage बनवाते हैं, even Corteva is providing this facility to the farmers in respective areas. We can get your silage tested once you make it, or otherwise you can also go to any nearby agriculture department or veterinary department. So they are usually having these facilities with them. They test the silage quality कि इसके अंदर लैक्टिक एसिड किस रेंज में है, पीएच किस रेंज में है, शुगर किस रेंज में है। सो ये उसके मापदंड हैं कुछ उसके अच्छी क्वालिटी साइलेज के, which should be taken care of. So primarily एक अच्छी क्वालिटी का साइलेज कैसे बनता है यहाँ तक हमने डिस्कस किया एट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होती है जैसे इसको लेकर के, तो उस टर्मिनोलॉजी के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। when we will be conducting in the future sessions also, this terminology would also be helpful for you to recall the things what we discussed in the previous sessions. So biomass जब भी हम बात करते हैं साइलेज की लैंग्वेज में, biomass is the total green part harvested, green part, that is the entire crop harvested from a field for the purpose of silage making, so that is called biomass.
साइलो, पिट या बंकर, दिस इज जस्ट अ गड्ढा जो हम खोदते हैं जमीन के अंदर, या मे बी वी मेक अ बंकर विद द कंक्रीट वॉल्स, जैसा कि मैंने आपको शो किया था, दैट इज कॉल्ड साइलो, पिट या बंकर। उसके लिए हम रिप्लेसेबली ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। इन सेलिंग एक टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है फॉर पैकिंग ऑफ दिस, इंटायरली कंपैक्टिंग एंड पैकिंग ऑफ द साइलेज। तो जब हम उसे टाइट करके बंद कर देते हैं तो उसे इंसेलिंग बोलते हैं। कंपैक्टिंग इज जो मैंने आपको मशीन में दिखाया था, जो मैंने आपको ट्रैक्टर से दिखाया था, वो कैसे उसके ऊपर टू एंड फ्रो मूव करके उसके अंदर का हवा निकालते हैं। Anaerobic condition means when we take the entire oxygen, entire air out of the fodder, try to seal it. Fermentation is again the breaking down of the difficultly digestible particles to easily digestible form. तो जब हम साइलेज क्यों बनाते हैं कि हम जो चारा एक इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, जब हम उसको फर्मेंट करते हैं तो उसके अंदर का जो केमिकल स्ट्रक्चर वो ब्रेक डाउन होकर डिफरेंट एसिड्स को रिलीज करता है, क्योंकि इजीली डाइजेस्ट होता है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। HML वर्ड यूजेस फॉर हाफ मिल्क लाइन, जो मैंने आपको बताया था कि चारे की हार्वेस्टिंग कब करनी है साइलेज के लिए, जब उसके अंदर का दाना आधा दूधिया होता है, हाफ मिल्क एंड हाफ स्टार्च इज उसका हार्ड हो जाता है, दैट केस। DM is used for dry matter, DMI is used for dry matter intake. Dry matter, like I told you के fodder के अंदर 15% तक का ही dry matter होता है, 85% उसके अंदर पानी होता है। तो जब हम 40 किलो fodder देते हैं किसी भी जानवर, तो यूजुअली वहां से 6-7 किलो ही जानवर को dry matter मिल पाता है। तो जो सूखा पदार्थ है उसके अंदर का, that is called dry matter. MB is called metabolic energy, CP is called crude protein, CF is called crude fiber. So these terminologies are used when you get your silage tested somewhere. Cob contribution is, I told you, the weight of cob in the total weight of the plant. And inoculants are special solutions made of different bacteria and other enzymes. So these are used for this further fast fermentation of the silage and proper silage timely making. Chop size is the size of the broken harvested part with the help of chopper. And baler is that machine which you saw, which is baling the machines with the plastic sheets. So this is the basic process. One last slide I do have with me is silage baling unit. So आप में से maybe out of you, the people who are attending this meeting, most of the people who are also thinking of के हाँ हम इस बिजनेस को अपने लिए तो बना ही सकते हैं, इसको एक बिजनेस की तरह कैसे यूज किया जाए। तो दोस्तों उसके लिए एक मोटा एक कैलकुलेशन आई हैव कैलकुलेटेड द इसका जो फाइन ट्यून्ड कैलकुलेशन है, that can if any one of you is interested can reach me out through SETC team. So साइलेज बेलिंग यूनिट के लिए अगर आप स्मॉल स्केल पे लगाना चाहते हो, 150 से 200 एकड़ को जो कैटर करने वाला साइलेज मेकिंग यूनिट है, तो उसके लिए आपको एक मशीन चाहिए होती है, सोइंग मशीन, जो कि ताकि आप अच्छे तरीके से सोइंग करवा सको फ्रॉम द फील्ड्स वेयर यू कैन गेट अ मैक्सिमम बायोमास। सो दीज प्लांटर्स आर कॉल्ड न्यूमेटिक प्लांटर्स, लगभग 4 से 5 लाख की रेंज में आते हैं। And then you can also buy harvesters. You have to buy harvesters and chopping machines. So this again varies from 5 to 6 lakhs. लगभग अलग-अलग ब्रांड्स के ऊपर वेरी करेगा। 5 से 6 लाख के अंदर आ जाएगा आपका। Tractor and trolleys, one set you need, at least 1 or 2 sets you need. So one set costs you 8 lakhs के आसपास का। Silage baling machine जो मैंने आपको दिखाया, this machine comes for around 15 lakhs. बहुत सारी स्टेट्स के ऊपर ये वेरी करेगा। ये मशीन अमूमन 1 कुंटल की बेलिंग साइज बनाने के लिए आती है। तो बहुत सारी स्टेट्स में यू कैन आल्सो चेक विद योर रिस्पेक्टिव एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर गिविंग सब्सिडी ऑन दीज मशीन टू सम ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स। सो साइलेज बेलिंग मशीन होगी, एंड उसके अलावा फिर देन यू विल हैव टू नीड योर लैंड एंड स्टोरेज एरिया, शेड लगेगा आपका जहां पे आपको वो पूरा सेटअप प्लांट का लगाना है, एंड 4 से 5 लोगों का उसमें आपको रिक्वायरमेंट रहेगा एज अ मैन पावर रिक्वायरमेंट। सो अगर इसका टोटल करेंगे अराउंड 30-35 लाख के आसपास का ये कॉस्टिंग बैठेगा वन टाइम एक एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप जाना चाह रहे हो। फायदे इसके दोस्तों क्या है, दैट इज लाइक यू कैन it is a future business actually. Once you come into this business,
there is no end. If you are doing it with the proper business sense, आप उसका कितना स्केल बढ़ा पा रहे हो, धीरे जैसे ही आप उसका स्केल बढ़ाओगे, आपकी 2 साल के अंदर अंदर ही आप इसका पूरी ये फिक्स मशीनरी का जो मैंने सेटअप आपको बताया, उसका ब्रेक इवन कॉस्ट यू कैन फाइंड इट आउट. And obviously you are making silage for yourself as well as for the community. This is a very future business, and this is a very beneficial business for you and as well as for the dairy farmers. Self-employment it gives to you, and as well as job creation for 4-5 other people also. बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड. आप जब भी जिन 150-200 एकड़ का बायोमास जिन फार्मर से खरीदते हो, तो यू कैन कोच देम, यू कैन गाइड देम, यू कैन अप्रोच अस आल्सो, व्हाटएवर टीम आल्सो फॉर रीचिंग आउट टू दीस फार्मर्स, हाउ टू कैलकुलेट दिस. एक एडिशनल आप क्रॉप ले रहे हो तो उसकी कॉस्ट क्या निकल करके आएगी, क्या कॉस्ट बेनिफिट रहेगा. एक एडिशनल कॉस्ट लगभग 80-90 डेज के अंदर की एक एडिशनल क्रॉप फार्मर इसमें ले सकता है, व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर अगेन. एंड देन इज बेलर का फार्मर का अच्छा एडवांस में ही कॉन्ट्रैक्ट रहता है यूजुअली, तो फार्मर यूजुअली गेट अ वेरी गुड प्राइस एंड दैट टू इन एडवांस. तो एक प्राइस की एक श्योरिटी रह जाती है, एंड ऑब्वियसली बाय इंप्रूविंग द मिल्क यील्ड एट द फार्म. So this is a brief from my side, and this is the silage zone. Silage zone is we help all the people, whether entrepreneurs or whether farmers who want to adopt silage and at their farms, at their businesses. We are there for a help, and we are approachable through SETC team, through Anupam ji and through Anurag. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Sunil ji. Thank you, Sunil ji, for taking us through this wonderful information about the silage industry, what is being done and what we have to do for the future as well. Thank you. We have certain questions, but we'll take those questions at the last, sir. Sure. Yeah, and I'll request Kalsi Saab. Kalsi Saab, you have please give us some information about the importance of feed and fodder in the dairy business. That is a very important part of dairy value chain to really give the profit to farmers, all these farmers, connected farmers. Yes, Kalsi sir, please. Sir, please unmute yourself, sir. Sir, please unmute yourself, Kalsi sir. Thank you, Anupam ji. Yes, sir. Good evening, all the participants. Atri sir, you have given a very good account of the total process of silage production and the technology involved. So that's very informative. So I will take you to through this animal nutrition and feed status, and what are the challenges with us, and how we can overcome this. So animal needs feed or ration or three purposes. One is maintenance, other is production, and third is the pregnancy. So we have to take care, the farmer has to take care that the nutritional requirement of the animal is met at all times. And secondly, what I have seen is particularly in Punjab where people are having high yielding animals. So here I have seen that Indrajit ji, you want to say something? Here I have seen that we are more towards draining the animal and we are less concerned about feeding the animals. So as a result, what happens? The farmer is more interested in early maturity and early pregnancy of the heifer and early calving, then maximum milk production from that animal. As a result, whatever the minerals and energy balance in the body of the animal, that gets depleted within 1, 2, or 3 lactations, and then animal becomes infertile. So that way the adequate nutrition and appropriate nutrition of the animal, it is very, very important. So coming to the nutrition, the major part of the nutrition of the animals is the fodder. So in Punjab, the situation is not that alarming, but still there are months in Punjab, there are seasons where the fodder availability is almost nil, particularly during the month of May and June. So there's no fodder.
So the farmer has to depend on the dry fodder and the concentrates. So I was going through some data. In 1990, the total area under cultivated area under fodder crops was about 82,60,000 hectares in 1990, which has come down to about 70,90,000 hectares during 2020. So there is a reduction in the cultivated area under fodder by about 14% over the last 30 years. Similarly, area under pastures and grazing lands, which was about 113 lakh hectares in 1990, it has come down to about 95 lakh hectares during 2020, and there is a reduction in this area also about to the tune of about 16%. So, with this scenario, the dependence for the feeding of the animal is more going towards the concentrates. The fodder availability area is coming down. So there are two options. One is we introduce high yielding varieties of fodder, for which in the past a lot of work has been done. Some varieties like sorghum strand grass has come, and there has been these have given some relief. But what is the nutritive value of those varieties? So except the filler, these are not much helpful to the animal. There is a need to, as the area is declining under fodder and pasture lands and grazing lands, so there is a need for increasing the yield of the nutritively rich crops like maize or legume crops, so that the feeding requirements of animals is met to a large extent from the fodder. Secondly, this requirement maybe can be met up to the maintenance part of the animal, maintenance requirement. So this requirement has to be, the increasing requirement has to be met through the concentrates, and already there is a competition between human and animal on the grains part. Only the grains which are not useful for human consumption, these are diverted to the animal feed. So the first requirement is the increase is the development of better high yielding varieties, and so that our animals get more nutrition from the fodder, and existing gap of the fodder or deficiency in the requirement of fodder, it needs to be plugged in. Secondly, coming to the enrichment of the fodder, just like our as we discussed silage. So presently silage is confined only to the large farmers. The farmers having maybe 50 animals, 100 animals, 20 animals. But for the small farmers, they are not in the business or in the I say practice of making silage. So in Punjab, which is the most advanced stage in animal husbandry, in this milk production, and farmers are very advanced. Here also, the silage making is confined only to large farmers. So there is a need for technology development, cheaper technology, like in the agricultural field, a lot of technology has come up, where machines are manufactured locally, and we have been able to overcome the deficiency of dry matter, dry fodders, like wheat harvester, where we can make the machine can make busa also from the stubble. So here for the farmer, for the smaller farmers, there's a need for development of technology where he can make silage during the time when he has sufficient or extra green fodder. So small farmers can venture only into this, and for venturing into this, it will also become a requirement
because as I was going through data, so current milk production in India is about 198.4 million metric tons. And by 2030, there is an estimate that by 2030, so this demand is going to increase to 380 million metric tons. So this increased demand for milk is from where it is going to come. It is coming from, it will come from the present stock, livestock, whether it is buffaloes and cows, and or there can be interventions in on breed improvement and introduction of high yielding breeds of cattle and upgrading of buffaloes, etc. But for increased demand, ultimately the nutrition. The nutrition part is the feed. So we can't increase the number of animals. Even if we increase the number of animals, they will also need nutrition. And from the existing animals, or even if we reduce the number of animals for production, there is going to be a heavy demand on the compounded cattle feed, or I will say improved nutrition. It can be in the form of cattle feed, compounded cattle feed, locally available concentrates, or enrichment of the fodder. So another area which I was just thinking when this presentation of Teresa was going on. So presently we are confining to silage making to the commercial fodder crops, I will say, like maize or sorghum or millets like that. But there are areas where agricultural byproducts, I will say agricultural waste, I will say these are available in plenty. And some technology has to be developed to use those crops, agricultural byproducts, straws for enrichment, like rice straw, paddy straw. In Punjab, a lot of paddy straw is burnt, and every year there is a lot of hue and cry about pollution, and paddy straw is burning in Punjab, and Delhi is making hue and cry. And similarly, in Western UP, if we see during the harvesting time of sugarcane, lot of sugarcane tops are available, which are highly nutritious, and these are fed to animals at that time, and these lead to oxalate, high oxalate content in the human. So if we can intervene at that time to, and we can persuade the farmers, or we can develop appropriate silage making technology, wherein these sugarcane tops can be conserved in the form of silage through some technology, so that the farmers can use these during the scarcity period, the in-season fodder. So similarly, technology needs to be developed for enrichment of straw, paddy straw. A lot of work has been done, but at the farmer level, adoption level, I will say it's very, very poor, almost nil. So enrichment of straw with the urea treatment, lot of trials, lot of work have been done, lot of paper have been published, but not much adoption has come. So we need to see into this, and we how this technology can, appropriate technology for the enrichment of byproducts, agricultural byproducts can be done. So these are the some of the points which I wanted to just highlight in this forum. So the and I want to share one of the my experiences which gave very rich dividends. So it was in the year 1994-95. So I was working with the National Dairy Development Board, when the managing director called us, and he told that NDDB is developing so many technologies for farm level, but these are not going to farm levels, and you have to do something. So we came to this in Punjab, Ropar Milk Union, Mohali, and I felt that there was a lot of hue and cry about one area where they were not getting milk, Anandpur Sahib area.
So they were not getting sufficient milk, and there are two chilling centers at that time. There were two chilling centers in that area, and they decided in the board to close down that area and close the chilling centers also. When we came here, we went to the farmers. We didn't tell them you adopt this technology, you do this. These are the inputs to be given. Nothing. We just went to the farmers. We just went to the farmers and we talked to them. We assessed what they need. What we felt is the farmer in that area, they had no knowledge about the feeding of the animals. Nothing else. So for them, cattle feed was just pellets and feeding was just giving almost half a kg of feed to the animal, irrespective of the production or the production potential. So then we decided to create awareness. We took the farmers from the villages, ladies, to the cattle feed plant, where they were briefed on cattle feed and feeding, how much feed is to be given to the animal based on production. And that approach and that strategy yielded very rich dividends. And now that is the major area where the union, I don't exactly know, maybe 2 lakh liters of milk they are procuring, and out of 2 lakh liters, 1 lakh liter is coming from that area. So this is the technology, how we spread the technology, we identify what the farmer needs and what is the, and we supply that technology. So similarly, if we have to increase the production, we have to meet our requirement by the year 2030, the requirement of 380 million metric tons. So that requirement has to be met through better feeding of the animal and exploiting the potential of the animal. And for exploiting the potential, or I will say, I will not say exploiting, so I will say that the potential of the animal, the production of every animal has a production potential. Some animals can give 5 liters a day, some animals can give 15 liters a day, some maybe 20 liters a day, so like that. So are we getting that milk from that animal? And for that, we have to improve the feeding. And as we improve the feeding, only then we would be able to meet the target. For improved feeding, we have to venture into balanced feeding, either through both through enriched fodder, better quality of fodder, and also through concentrates or balanced cattle feed. So this is very well said, Kalsi sir. Thank you, sir. Very well said, sir. Very well said, sir. And this is a very important subject as far as the dairy industry, dairy business is concerned. We have got few questions, sir, here. Though number of questions are very more, but I'll be, because of the paucity of time, I'll be taking 3-4 questions. And this first question, Kalsi sir, is for you. Like somebody has asked, how do you see fodder availability with the decrease in land availability for agriculture? Kalsi sir? Kalsi sir? Kalsi sir, this question is for you. Yeah. Somebody has asked, how do you see fodder availability with decrease in land availability for agriculture? मतलब हमारा जो जमीन एग्रीकल्चर के लिए कम हो रहा है, फॉडर के लिए कैसे उसको आप देखते हैं सर? It is already, as I have given the data. Yes. In 1990, the area under fodder cultivation was about 82,06,000 hectares, which has come down to 70 lakh, about 71 lakh hectares in the year 2020. So already area under fodder is shrinking. Grass, this grazing lands and pastures, these are also shrinking. Area under grazing land and pasture has come down by 16%. So 14% decline in the area under fodder crops. So this is a major challenge, because for the farmer, it's a trade-off between the cash crop or fodder. So farmer always goes for the cash crop for the better return, because in India, under Indian conditions, the land holding is small. Farmer can't afford to spare much area, larger areas for fodder. He has to
first his priority is the cash crops, and then he will see based as per his requirement how much area he should spare for fodder. I think this is really, yes, sir. As I indicated, that this requirement has to be met through high yielding variety, development of high yielding varieties, and adoption of high yielding varieties at farmer level. And these high yielding varieties, I don't say blindly that adoption of high yielding varieties, but there are inputs also required for these high yielding varieties. The irrigation is required, then other inputs for high yielding varieties are required. So, but lot of work needs to be done for development of high yielding varieties and adoption of high yielding varieties. The other option is the use of agricultural byproducts like enrichment of wheat straw, enrichment of paddy straw, and also like as I gave the example of sugarcane tops. And there will be many other agricultural byproducts from area to area. Very true, sir. Very well said. I think this is a big challenge, but solution lies there only, sir. Like improved varieties, and the silage is also one of the major solutions for such problems, sir. Yeah. Now, another question is from Sunil sir. Somebody has asked, what is the major challenge in silage business, and how we are going to overcome that business? First, you have to tell what is the major challenge, and then how we are going to overcome, sir. Sunil sir. अगर मैं इसको दो तरीके से देखूं अनुपम जी के साइलेज बिजनेस के अंदर मेजर चैलेंज क्या है, तो मैं दोनों तरीके से आंसर देना चाहूंगा. वन इज फ्रॉम द फार्मर एंगल, वन इज फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर एंगल. But keep it short, sir. Yeah, obviously. So फार्मर एंगल से अगर हम इसे देखते हैं, कोई चैलेंज नहीं है, सिर्फ इसका एक अडॉप्शन का चैलेंज है. तो मुझे अडॉप्ट करना है. सिर्फ एक साल में एक बार की वो मेहनत है. सिर्फ ये जिसने एक बार अचार डाला है, जिसने एक बार साइलेज डाला है, I can help them, these people whoever wants to connect to those people who are early adopters. तुम उनके साथ अडॉप्ट करवाता है. This is all lies over here. कोई चैलेंज नहीं है इसके अंदर. दूसरा, अगर if there are some financial inputs like गड्ढा खोदना है या उसके अंदर प्लास्टिक शीट्स या टारपोलिन लगती है, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स भी इसके ऊपर सब्सिडीज भी देती हैं सब चीजों के लिए. तो वी शुड बी अप्रोचिंग देम. इसलिए मुझे कोई ऐसा कोई चैलेंज नहीं दिखता. साइलेज बेलर यूनिट के लिए भी कोई ऐसा चैलेंज नहीं है, बिकॉज डे बाय डे जैसे एनिमल नंबर बढ़ता जा रहा है, जैसे कि फॉडर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है और लैंड कम है, तो इसका बिजनेस एज अ बिजनेस इनपुट भी इसका यूज होना ही होना है. इसलिए आई डोंट फाइंड एनी मेजर चैलेंज इन दिस. ओनली एक ये है कि सिर्फ आपको इसका जो प्रिजर्वेशन का जो टेक्निक, वो टेक्निक अगर प्रॉपर्ली करनी है ताकि उसके अंदर कोई वेस्टेज ना हो, उसके लिए हम बैठे हैं. बिल्कुल सर. I think you have rightly said, sir. Actually, it is an approach of the farmers, and they should take fodder business or silage business as a business model. That approach is needed at this point of time. Sir, another question. I'll take one more question. This is the last question which I am taking because of the paucity of time. And this is jointly from Kalsi sir and Sunil sir both. See, we have got an alternative, like one is silage making. If we have to make available the fodder for the complete year. Another alternative is the low-cost hydroponic model, where you can produce green fodder. What is the which should be practical, adoptable business, sir, in these two options? Kalsi sir, first you tell, then I'll take Sunil sir also. I don't discriminate. I won't say which is better or which should be adopted. Okay. So both have their own place. Both have their own qualities and benefits. So it depends on the availability. When we talk of hydroponics, hydroponics is dependent totally on the good quality seed, good quality grains. So when we talk of say for example maize, so we need very good quality the seed with more than 95% or 90% germination we need for hydroponics. So its use is very good, but its cost is high. So the farmers can adopt it, they can try it. If they feel that its cost benefit ratio they can find, and if they are getting better benefit than the cost, and definitely it will be a major use.
And another thing which I want to highlight here is India as such. There was time when India was deficient in the food grains. Now, as I understand, India has the stocks of food grains sufficient for 3 years. And we have the problem of storage of food grains. If in Punjab every year there is thousands of tons of wheat Yes. is destroyed because of storage in the open space. Yeah. Space. And my colleague Mr. Inderjeet Singh Saraj is here, and I think he can substantiate my what I say. So there is a need at the government level also to promote these new technologies where this whole grain is needed, and so that we can also come out of that problem of storage and spoilage, and that we can also get better productivity, and that is the hydroponics. And also maybe we can also use that for fodder also. So that is, and secondly for silage, no doubt the silage is has its own place, has its own importance. So silage is when we have surplus fodder, and hydroponics can be grown at any time. Yeah. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Kalsi ji. Good evening, Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Everybody listening here, I am Inderjeet Singh, ex-director Dairy Development of Government of Punjab, now working as a consultant with the Milkfed Punjab ASCI. And today's topic is very relevant toward this roadmap for the next roadmap for the dairy sector. सर जब भी कलसी जी बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि हमको क्रॉप हस्बेंड्री के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री का देखना पड़ेगा। राशन सिक्योरिटी की अत्री जी ने बात की, बहुत अच्छी बात है। राशन सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी की बात सभी करते रहे अभी तक, जब तक काम चलता रहा। अब राशन सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। सेमी स्टार्विंग कंडीशन में अभी हमारे एनिमल है हमारे टोटल इंडिया के, तो उनको पेट भर जब खाना पेट भर जो फॉडर नहीं दिया जाएगा तो बहुत मुश्किल है। लेकिन दो ही मेरी ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट इज के जो हमारी अभी अफ्लाटॉक्सिन का लेवल भी के साथ साथ हो सकता है अगर हमारी जो टेक्निक्स है, अगर हमारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर हमने नहीं मानी तो वो भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व ना हो जाए। दूसरी बात है कि बिकॉज दिस इज ए मैकेनाइजेशन, फुली मैकेनाइजेशन ऑफ फॉडर हार्वेस्टिंग, सोइंग एंड देन बेलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं ये कई बार से देख रहा हूँ कि एग्रीकल्चर मशीनरी के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है दैट इज नेग्लिजिबल। आई थिंक वो रिड्यूस ही हो चुकी है काफी इन द फेज्ड मैनर। डेयरी इंडस्ट्री जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो भी इसका बेनिफिट लेगी है, लेकिन जो डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो हाइड्रोलिक फॉडर सीडर है, चाहे वो मेज हार्वेस्टर है, सिंगल रो डबल रो, और चाहे वो अभी आप जब आप बेलर की बात कर रहे हो और रो इंडिपेंडेंट और जो सेल्फ प्रोपेल्ड फॉडर हार्वेस्टर है, वो सभी काफी उनमें से कुछ बाहर से भी आए हैं, कुछ टर्की से आए हैं, कुछ कहीं और से आए हैं। तो आई थिंक कि जे हमको कहीं ना कहीं आइडिया में मैं भी ले लूंगा, आप भी कहीं सभी लोग हमारे जो माननीय जितने भी हैं लोग, तो ये इशू हमको लेना चाहिए। अगर पैरेलल रखना है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को, जे पैरिटी हमारी डिस्पैरिटी लानी चाहिए। बाकी सेमिनार बहुत अच्छा रहा और पंजाब इज गोइंग टू बी फॉडर बैंक फॉर द रेस्ट ऑफ कंट्री। थैंक यू सर। थैंक यू इंदरजीत सिंह सर। It was really a very entertaining and knowledgeable session, Jaswant, Kalsi Saab and Sunil Saab. I really thank both of you and will definitely have more such sessions in future. But before ending, अत्री साहब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ पे जो लोग सुन रहे थे, it was really people from north and east, large people were there. And I would like to thank, special thanks to Dr. Inderjeet Singh, जो अभी जिन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया सर, इज एक्स डायरेक्टर पीडीटीबी। मिस्टर पीएस सैनी, हु इज एन स्पोक्सपर्सन फ्रॉम आईसैप, थैंक यू सैनी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मिस्टर करनैल सिंह साहब, ही इज डायरेक्टर डेयरी डेवलपमेंट पंजाब। Karnal Singh साहब, really thankful to you. I was trying to connect you a few days back. We'll connect you again, sir. Utpal Sharma साहब, Utpal Kumar Sharma साहब, he is a dairy director, dairy development Assam. He is a very good friend of mine and I keep on disturbing him time to time. Then all other KVKs and
dairy cooperatives, dairy corporates, and individual entrepreneurs who have joined us for this program. I am really thankful to all. And with these notes, I am closing this session today. With a hope Atri Saab and Kalsi Saab will meet again and will hold a series of such sessions on this. Thank you very much, sir. Thank you, Anupamji. Thank you. Thanks a lot for the platform. Yeah, thank you, sir. Thank you. Thank you.